Good morning. You all are muted by the host. That's why you cannot speak right now. I can't listen your voice. Fine. So we were doing the exercise of the ice cream man, and from Wednesday we will be taking the creative part of the grammar. Fine. I'm sharing my screen with you. Monish, Monish Tyagi, can you see my screen? Inderjeet, show me your thumbs up. Fine. This is the poem number 1, An Ice Cream Man. We have read it yesterday. Fine. We read the poem. That the poem is about an ice cream man who brings delicious ice cream and cold drinks for the children. And this was the poem which we read yesterday. It is composed by Rachel. After that, we read the word meaning of the chapter. Then we did the question answer of the chapter. We discussed the question answer of the chapter. Then today we are going to do the exercise. This is the exercise. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in winter season. You will have to write those enjoyable and exciting activities which we do in the winter season. Like in winter season, we can eat ice cream. Fine. Because it gives us so much excitement. Rachel Field is the writer. Good. You can write the answers in the chat box if you want to answer the activities. Fine. You can write eating an ice cream, or you can do ice skating. Fine. Or we can have hot coffee or hot drinks in the winter. Drinking soup, good. Cold coffee, very good. And eating popcorns, ravies. Hot coffee, yes. Playing with the snow, yes. This is also an enjoyable activity. Playing with snow, good. Hot coffee, Ridyansh, very good. Drinking coffee, fine. So you will have to write only 6 activities in the given portion. You will have to write these activities which you are naming. Fine, you will have to write these in the given part. You will have to write 6 enjoyable activities that you find you exciting and you can do it in summer season. Fine. Yes, I am having some more answers. Hot coffee sitting around fire. Yes, this is too good, Prabnoor. Very good. Indrajit, give me answers. Jaideep, Ansh Mehta, right?
Avyan Kumar, eating samosa, very good. You can, yes, cold drinks in summer, very good. Or we can go to hill station to watch snowfall, hot chocolate, good. So you can write the 6 activities in this given question. Fine. Next, let's move on to next exercise. This is list as many summer activities as you can. You can write more activities. Bonfire, very good. Wearing woolen clothes in winter. It's exciting. Okay. You can write more activities in this portion, but you have to write the activities which can be done in summer season. You have to keep in mind that you have to write the activities of summer season. Summer season, fine. Like we can go for a picnic. Hello. Yes, we can go for a picnic nearby a lake or a pond, drink juice, drink coffee. Ridyansh, very good. Bath with cold water, swim in cold water, eating ice cream, cold drinks, go to picnic, playing games, cold coffee. Ma'am, this work we have to do in book only. Yes, Rowanpreet, you have to do in book only. Fine. As you have said, many activities which you can do in summer season, you have to write these activities in this column. Like we can go for picnic, we can play outdoor and indoor games as well, video games, and we can, Siddhi, Piyush, swimming, very good, swimming. We can also eat ice cream, very good. Write your answer in chat box, fine. Siddhi, lower down your hand, Monish. Siddhi, 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 I can't find you. Yes, Siddhi. Yes, Siddhi. Ma'am, Yes. see, upward the page, I want to ask you something. Upward the page, please. Okay. Yes. Ma'am, there it is written, write about some exciting and enjoyable things that we can do in winter season, not in summer that you are saying ice cream, swimming. No. Exciting activities that can be done in winter season. Many people eat ice cream in winter seasons because they find it exciting. That's why I was saying it. Fine. Okay, If you ma'am. don't think if you don't think ice cream can be eaten in winter season and it is not exciting, you can delete it. Okay, Fine. ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay, fine. Now you will have to write the summer activities. As you have described so many activities, I have found so many answers. Go in hillside for picnic. We can also play games. I eat, ma'am. Good. Go in snowfall. Very good. Summer season. Go to hill stations basically. There you will not find snowfall at that time, but you can find cool weather there. So you have to group
These now, whatever activities you are going to write in this column, question number 2, you will have to divide it into 2 activities, indoor and outdoor. Indoor activities are those which can be done inside the house, and outdoor activities are those which can be done outside the house. That's why it is written outdoor. Indoor means inside the house. So swimming can be done outside the house, and playing video games can be done inside the house. Go to picnic is a outdoor activity, and drinking juice can be indoor. Very good. We can also eat mangoes in indoor. Ludo, carom, indoor. Good. Yes, you will have to divide these activities into outdoor and indoor portion. Now, this is the next exercise. Say aloud. Circle the words where you get a z sound. Z. Fine. Read these words like honeybees. Z. Rupanshi, very good. Hot coffee. Honeybees. You are getting z sound, long sound of z. Z. Eating ice. Fine. Now look at these words like price. Price does not give the long z sound. And if you look at the word price, it gives a long sound. So price will be circled. Fine. Price. Now, give me the answer. Harnoor Singh. Right answer only. As you are saying, fizz. Fizz also had long sound of Z. Fizz. Maze. Good. And you have said blaze. Good. Fizz made maze. No, made is not a word. Maze. Fizz. Fizz. Raise. Good. Lazy. Raise. Lazy. Z sound. Long sound. Anuvya, you have given all the answers, I think. Race, no. These, good. These, we get long sound of Z. These. Is there any word which is left? These, good. Lazy, good. These, good, Rupanchi. This is a word, busy. Ace, no. Rice, no. Rice can be done. Chase, very good. Chase. So, in this way, you will have to circle the words which give long sound of Z. Okay, ma'am. Raise. Good. So you will have to circle these words in the book only. If you have book, don't write these exercise in your notebook. It will only be done in book, textbook only. Now, the next, listening to the sound that these words in the poem produce. We have read the poem and we know the sounds of the poem, sound of these words like cart. Ice cream man comes in his trundling cart. So what
sound the cart produces? Trundling. So in this space we will write trundling or trundle. Okay, Siddhi. Yes. Ice cream man with his little cart goes trundling, Down this. down the street. But Yes. the word is Trundling. So the sound. still. I'm the ice cream man with his little cart. Okay. So I was focusing on the word that the sound which cart makes. Cart makes trundling sound. Fine. Okay, ma'am. We have to tell the sound that these words in the poem associate or these sound produced by the words. तो मैम ड्रिंक का फ्रॉस्टी फिज होगा. Yes, yes, होगा. yes. So cart, trundle and drinks frosty frizz. Can you make these sounds? Yes, we can make these sounds. Yes, Rupanshi, you will do this exercise in your book. What are some of the different sounds that you can hear when the ice cream man comes? Whenever an ice cream man comes in your colony or comes in your area, what are the sounds that are being heard? Ting, ting. Yes, bell, bell, good. Next, sound of bell. Very good, Dhanishta. Sound of bell. What are the sounds that are being heard? Shouts of the children or message me. Yes. Spurs sing Rosera. Nagin song. Spurs. This sound is not related to ice cream man. Please. Ice cream man shout to take ice cream. Very good. Shouts of the ice cream man. Loud cry of the ice cream man. Good. Ice cream le lo. Very good. Tasty ice creams. Creamy ice creams. So many sounds we heard when ice cream man comes in our area. Now let's look at the next exercise we're gonna do. Find out and write a report. This is Uncle Farm's report. Uncle Lal's farm. Fine. This is an example where father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cow. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. So this is the report of Uncle Lal's farm. The farm has got how many cows, what do they eat, and how the way they are milked, and where do the uncle sells his milk. Fine. So this is a report. So whenever we write a report, we remember certain things. You have to write a report. Like the title must be good, appropriate, and the words, the sentences which you are writing, it should be associated with your subject or topic on which you are writing. Yes. Tell things in the right order. We have to keep the right order of the things. Like in this report, there is everything which is sequenced. Like first he went to visit uncle's farm, then what did he see there, then how many cows were there, what were they eating, what happened in the evening. Fine. There is a sequence of the sentence. Yes, who has raised hand?
Garv. Yes, Garv. Garv, Yes. do you have any doubt? No. गलती से हो गया था. Okay. Make sure that it not happen again. Now, Rowanpreet. Rowanpreet. Fine. So you have to write a report. Make your paper look neat. You will write a report on different brands of ice cream. You have to write on the topic different brands of ice cream that are available in your area. And you will use these clues. And then you will write a report. Like start with a short introduction which contains the topic. First of all, you will have to write a short introduction of ice cream. Fine. Then list the ice cream brands available in your area. Then you will write about the brands that are available in your area. Monish? Yes, Monish? 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 जुआ सट्टा. Ma'am, can't miss. Monish? Do you have any query? Ma'am, yes. Can't mean. Munish. Ma'am, First of all, you will write a short introduction about the topic ice cream. Then you will write about the brands that are available in your area. Then after that, you will write about the common flavors of the ice cream. Yes? Fine. So after writing the various brands of the ice cream, you will have to write which are the common flavors of ice cream in each brand. Fine, like Amul also has vanilla, strawberry, and chocolate ice cream, and there are many brands like Quality Walls has the same flavor, and so there are many brands. You will have to write the common flavors of the ice cream in each of the brands. Then after that, under each brand, you will have to find out that the flavors they are selling, and you have to find out the prices also. Fine, like the Chocobar, or the price of Chocobar is 25 rupees. Fine, in that way you have to write the prices, about the prices also. And finally, you will have to give the statement in which you will write which flavor do you think is the most popular ice cream and why. Vadilal, very good. Oreo. Oreo is a biscuit. The answer rupees 20. Fine. Please tell the groups. What groups? Because when you will write
the statement, then only you will write we or our friend. Fine, you will not write I visited, because you have to work in a group activity. Fine, then you will write we or our friends visited. Oreo is a cone also, very good. Chocobar, good. So in this way you will have to write a report. Word building, that we have also done in the past exercise. Color the boxes that have rhyming words. You will have to color these boxes which have same rhyming words, like heat, street, they are rhyming words. Blows, goes, they are rhyming words. Blue lagoon, okay. Black currant, very good. Now answer the next question. We have also done it in the notebook. You have sent me as a homework. Fine. Race, face, these two words are rhyming words. You will have to color this box. Right, night. Fine. This box will be colored. So you will do this question in that way. Next. What do the following words describe in the poem? Joyful. We have read the poem and we have to write from the poem that these words belong to. Fine. What do these words describe? Like joyful, what? What was joyful in the poem? Joyful sight. Little. Little what? What was little in the poem? Little cart. What was round in the poem? Round umbrella. Joyful sight. Oh, what a joyful sight. The ice cream man with his little cart. So we will write cart. Round, what was round in the poem? Round umbrella. Beneath his round umbrella. Fine. So you will write this word in these. I'll be giving you this exercise as a homework. Turn on your video, everyone. Turn on your video. Monish,
So, what are the describing words used in the poem for the following? Mounts, flavors, cluster. These words come in the poem, and these words describes something in the poem.
Hello, good morning. Good morning. I can see the new faces as well. And the old faces, my little kids. Oh my God. See this blushing faces, seeing the ma'am, right? After a long time. Yes, Siddhi. Okay. Let me just meet with the new ones also. Anuvya and Araf, you people are new. Yes, ma'am. From which school? Ma'am, APS, Army Public School. Okay. Give me. Yes. Anuvya and Araf. So we're from which school? Ma'am, APS, Army Public School. Okay. Which place? Nainital only. No, ma'am, Meerut. Okay, Meerut. Okay. Welcome to Bharatiam. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Shavgun is also there, a new kid. Shavgun, hello. Your voice is not coming, beta. मैं बंद कर दो यार, मैं ड्रामे voice is not बंद कर दे भाई. Your voice is not coming. Take your audio. Okay, okay. Till the time we'll start. So today I'm here to take GK class of yours. Okay, GK. I'll be teaching you SST also, but when you will come to physical classes, when you will come to school, then I'll be taking SST of one section. Okay, but right now I'll be taking one section of GK also. Okay, I'll be taking one section of GK and one section of SST. Okay, with our parallel teacher that will let you know soon. Okay, so today I'm going to take the topic for the class, that is, this chapter is in your class 5 SST2. So this will help you to learn the important dates when you will be going in PU. जब आप PA2 तक पहुंच जाओगे तो एक चैप्टर आएगा आपका India's independence war. There are 2 chapters of history in our class 5. So this will help you in doing that. Okay, Vatsal is very happy. Okay, so I'm going to share screen. So I'm going to share the screen with you people. Wait.
wait. No, wait. Hmm. Now, okay, okay. Avyan, Kashni, okay, and Avyan Araf has given thumbs up. Okay, Dhanista, okay. Stop annotating, beta. Okay, okay. Now see, actually, India, if you know that India, many years back, India was known as golden bird. सब इंडिया को क्या बोलते थे? Golden bird बोलते थे. India was known as golden bird. India was rich in spices, it was rich in gold, it was rich in agriculture. Today also most of the population is indulged in farming. Okay, so many people from different countries, even many parts of the country, the European countries, the other parts of the country, the American countries, want to what do trade with India. Okay, and want to have a control over India. So while people searched about the country, the people travel karte the, many people got to know about, many people discovered places. Okay, wait. So people used to explore different places. That age, that time was known as the age of exploration. Okay, so many people have tried to discover India, and during the discovery of India, even the other places also was discovered, like Christopher Columbus. Okay, he was trying to discover India. He was trying to discover different places, and he got to know about what? America. ओके, सो उस टाइम पे उन्होंने अमेरिका की खोज की थी. वैसे ही वास्को डिगामा, सेम वे द वास्को डिगामा, द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, he was from a European country. He was the first European explorer who explored, who discovered India, and through sea route. उन्होंने नया एक सी रूट ढूंढा था. बहुत से लोगों ने कोशिश करी कि एक सी रूट ढूंढे या कोई भी लैंड रूट ढूंढे कि हम इंडिया तक पहुंच सके और उनके साथ ट्रेड कर सके या उसके ऊपर कंट्रोल कर सके. So many people, and one of the person, Vasco da Gama, was the first European to explore the place through sea route, and that sea route was named as Cape of Good Hope. ठीक है, उस सी रूट को नेम दिया गया केप ऑफ गुड होप. आई जस्ट एक्सप्लेन very shortly because this chapter will be explained by Sonal ma'am, okay, during the classes, and if not, we'll be explaining in the school. This is GK, so we need to just have an idea. Okay, so same way when Vasco da Gama explored, what was the date? So first date is discovery of India. So when did Vasco da Gama discover the India? On 20 May 1498. ठीक है, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने इंडिया को क्या करा? डिस्कवर. को रूट मिला, एंड दैट रूट वाज नेम्ड एज केप ऑफ गुड होप. ठीक है, उस रूट को, सी रूट को उन्होंने अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक का ये रूट ढूंढा था. ठीक है, इंडियन ओशन इज एन ओशन इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, है ना, यू नो दैट, है ना. ओके, सो उन्होंने ये रूट ढूंढा, अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक रूट ढूंढा और इंडिया को सर्च करा, इंडिया की डिस्कवरी करी, एंड दैट डेट वाज 20 मई 1498. ओके, ऐसे ही बहुत ऐसे ही ब्रिटिशर्स का आना स्टार्ट हुआ. सो many people, many countries, many places have fight between them that they will trade with India, they will trade with India, they will trade with India. And which countries, which people were there? Portuguese people were there, British people were there, French was there, Dutch was there.
ठीक है. British people was from England side. Okay, they were from England. So they have a fight between them that they want to trade with India. They want to have a control over India. So कौन जीता इन सब में? Britishers जीते. Fine. उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी तो वो लोग जीत गए. So they founded a new company in India, a new organization, और उनकी एक टीम बन गई जिसको नेम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जब भी आपने कोई मूवीज देखी होगी पुरानी टाइम की, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल करा, सो यू नो दैट ना उस कंपनी को क्या बोलते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो उनकी टीम होती थी उनको बोलते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड दैट वाज लीडेड बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ऑन दैट टाइम. ओके ओके, अंडरस्टूड. सो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया ने उनको क्या कहते हैं हेल्प करी टू एस्टैब्लिश दिस कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा करेंगे. What are princely states? The states that were rich in something. Like Bengal on that time was rich, very rich in spices. That place was very rich in education. वहाँ के लोग बहुत educated थे. Fine. So they thought that they will first capture the princely states. ठीक है. Spread करते करते उन्होंने क्या करा, जब इंडिया को पता लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमसे चीजें बहुत सस्ते में ले रहे हैं एंड दे आर सेलिंग देम इन हाई रेट्स. ठीक है. सो इंडिया डिनाइड कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे. ब्रिटिशर्स को उन्होंने डिनाई कर दिया. फाइन. सो ब्रिटिशर्स वाज हैविंग अ वेरी, they were not having a very high army. अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया के लोग इतने ज्यादा थे कि उनकी आर्मी उनके सामने कुछ नहीं. लेकिन उनके पास आइडियाज थे, उनके पास वेपन्स थे. ठीक है. और उनके पास एक एजुकेटेड आर्मी थी. और हमारी एजुकेशन उस टाइम पे बहुत लो थी. ओनली सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर एजुकेटेड, लाइक बंगाल पीपल वर वेरी एजुकेटेड. फाइन. सो हमारी इंडिया के पास जो आइडियाज थे वो इतने अच्छे नहीं थे. सो व्हाट दे डिड, दे मेड टैक्टिक्स, उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाए और उन्होंने क्या करा, हम प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर में कैप्चर करेंगे. सबसे पहले उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी. फाइन. सो दिस प्लेस प्लासे, are you able to see Battle of Places being written? So this was a place in Bengal only, Plasse, name Plasse. तो उन्होंने इसके ऊपर लड़ाई लड़ी and this fight was named as Battle of Plasse and it was held on 23 June 1757. Okay, 23 जून और 1757 को ये बैटल स्टार्ट हुई और तब ये बैटल लड़ी गई जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए. Fine. So on that time, Nawab of Bengal was there. Who was Nawab of Bengal on that time? During that time, Nawabs were ruling. Nawabs were taking care of the places like Bengal, Patna. इन जगहों की यहाँ पे नवाब एज अ किंग उनको टेक केयर कर रहे थे स्टेट्स को. ठीक है. तो इनकी लड़ाई हुई नवाब ऑफ बंगाल के साथ और उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला. ठीक है. So Battle of Plassey में सिराजुद्दौला हार गए and that was held on 23 June 1757. Again they fought for another place of Bengal, that is Bagjo. Fine. That was also in Bengal. पहले वो बंगाल में था लेकिन अब बगजर कौन से टाउन में, एक स्मॉल टेरिटरी है. कहाँ पे? पटना के पास. ठीक है. बिहार के पास, पटना के पास एक स्मॉल टेरिटरी है. बगजर वाज बिफोर इन पार्ट ऑफ बंगाल. मिलन focus it here beta. So Bagjar was before in the part of Bengal, but now it is a small territory in Patna, near Patna. Okay. So next town they took, that is Bagjar. Okay. And this Battle of Bagjar was fought on 22 October 1764. 1764 में 22 अक्टूबर को लड़ाई लड़ी गई और इसमें भी हार गए. और उस टाइम पे नवाब कौन थे? मीर कासिम. ठीक है. मीर कासिम. ठीक है. उस टाइम पे नवाब थे और वो कहते बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नवाब माने जाते थे सारे नवाब्स में, जिससे
स्टार्ट हुआ था नवाब का रूल करना, तब से वो उन सब में वो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, मीर कासिम। ठीक है, यहीं से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1764 के बाद क्या हुआ, जब लोगों ने इन्होंने इतने सारे रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, बीइंग इन इंडिया, इंडिया में रहकर इंडियंस के लिए रूल बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि सब्सिडरी ऑफ अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस मतलब कि सबको पे करने हैं, और कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किंग का बेटा, अगर किंग का खुद बेटा होगा, ब्लड सन होगा, तभी वो उसकी गद्दी ले सकता है। इफ नॉट, अगर वो उसके छोटे भाई का बेटा होगा या किसी और का बेटा होगा, सो ही कैन नॉट। पहले किंग्स क्या होता था, अगर उनका खुद का बेटा नहीं होता था तो उनके ब्रदर का सन उनकी सीट पे बैठते थे। इफ द किंग इज डाइड और ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज प्लेस और ही इज टेकिंग रेस्ट फ्रॉम हिज प्लेस, तो क्या होता था, उनके भाई का बेटा। लेकिन उन्होंने एक ऐसे लॉज इंडिया में आके लॉज जीत चुके थे इन प्लेसेस के ऊपर कि किंग का अगर खुद का ब्लड सन होगा तब वो गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, तो इतने सारे लॉज कर दिए जिसकी वजह से इंडियंस को गुस्सा आ गया, एंड दिस स्टार्टेड ऑन दैट टाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको रानी लक्ष्मीबाई वाली स्टोरी दिखी होगी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस, एंड दैट फर्स्ट वॉर, यहीं से वॉर स्टार्ट हुआ था। That first war started from 10 May 1857 and went till 1 November 1850. Sorry, ठीक है, सो यहीं से पहला वॉर स्टार्ट हुआ था जिसमें अलग अलग लोगों ने लड़ाई लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तात्या तोपे और बहुत सारे ऐसे ही लोग थे। Fine, if I'll talk about the Nana Saheb Patekar, I'm saying he is a actor, Nana Saheb, okay, Begum Hazrat Mahal, then जब ये ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ, ओके, जिसमें इंडिया हार गई थी, यहीं से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे फॉर्म व्हाट। लेकिन उन्होंने इस वॉर के बाद क्या करा, जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया हार गया, फाइन, उन्होंने क्या करा, लेकिन कुछ जगह पे जीता भी, और उन्होंने ये चीज क्या कहते हैं देखी कि इंडियंस की जो आर्मी है, और यू कैन से द इंडियन पीपल आर वेरी मच यूनाइटेड, सो वो हमें हरा सकते हैं। सो दे ऑलवेज यूज द टैक्टिक्स, उन्होंने हमेशा टैक्टिक्स यूज करी और उन्होंने हमेशा स्ट्रैटेजीज यूज करी, वो हमेशा सेफर साइड पे चले। उन्होंने क्या करा, formation of Indian National Congress. Do you know the Congress Party today? INC. Okay, so that was formed that time only by a person, British person only, who was that time the Secretary General. Okay, उस time पे वो Secretary General थे British East India Company की, that is A.O. Hume. ओके, ह्यूम ने ये पार्टी फॉर्म करी, और इन्होंने इसलिए करी कि जो इंडियंस है वो शांत रहे। अगर क्योंकि इंडियंस मिल जाते और लड़ाई लड़ते तो ब्रिटिशर्स जीतते नहीं या कभी रहते नहीं। फाइन, सो व्हाट दे डिड, दे फॉर्म एन कमिटी, और यू कैन से द पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन विच द इंडियंस वर इवन गिवन द राइट्स टू स्पीक, ओके, एंड द ब्रिटिशर्स इवन वांट टू अप्लाई देयर ओन पॉलिसीज, उनको भी हक दिया गया कि दोनों मिलकर यहाँ पे बोल सकते हैं। फाइन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी, एक गवर्नमेंट यूनियन से एक पार्टी करी जहाँ पे इंडियंस को भी और क्या कहते हैं, इंडियंस को भी और ब्रिटिशर्स को भी राइट मिला कि दे कैन टेल देयर थिंग्स, दे कैन स्पीक अप देयर आइडियाज, दे कैन अप्लाई देयर पॉलिसीज। फाइन, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये से एक दूसरी टैक्टिक, दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं,
हमें हमसे लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा. So what they did, seeing this, they have put a divide and rule policy and did partition of Bengal. Bengal, I told you, was a very rich state in terms of agriculture, spices, in terms of studies, education, in terms. Bengal, अभी भी अगर आप बोलोगे वहाँ लोग से ज़्यादा educated है. Fine. Siddhi, you want to say something? No, ma. Okay. So, so they what they did, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा हम इन लोगों को ही डिवाइड कर देते हैं in terms of Hindu and Muslims. So they did a partition of Bengal, okay, and they did two partition, that is East Bengal, West Bengal. एक पार्ट में Muslims रहेंगे, एक पार्ट में Bengalis and Hindus रहेंगे, ठीक है. लेकिन यहीं से लोगों का खून, their blood started boiling. यहीं से वो और गुस्से में आ गए, and what they did, they started doing rallies, they started boycotting the goods of पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स अपना गुड्स बेचते थे and people started buying also, ठीक है. Seeing the variety of goods and seeing the quality of goods, they started buying also. लेकिन यहाँ से लोगों ने मना कर दिया, सब इंडियंस को ये मना हो गया कि nobody will use the स्वदेशी. स्वदेशी मतलब foreign goods and everyone will boycott. यहीं से जो लिक्वर यहीं से स्टार्ट हुआ था, started by the ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था, ठीक है, लिक्वर. एंड पीपल सेड कि हम लिक्वर की दुकानों को आग लगा देंगे एंड विल पुट अ फायर ऑन द शॉप्स, whatever shop is selling the foreign goods and everything. So Swadeshi movement start हुआ 7 August 1905. Now you will say मैम पार्टीशन ऑफ बंगाल तो बाद में हुआ 16 अक्टूबर 1905, लेकिन स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट तो पहले स्टार्ट हो गया. Why Swadeshi and boycott movement was started before? Because July 1905 में ही वो अनाउंस कर दिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है. सो जुलाई 1905 में ही अनाउंस हो गया था और वहीं से सिर्फ सुनकर ही लोगों को इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. फाइन. और उसके बाद पार्टीशन लेकिन फिर भी हुआ, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में. ड्यूरिंग दिस टाइम, okay, during this whole independence war, a song was composed by Rabindranath Tagore, Vande Mataram. Okay, this is our national song and इसको national song की जो name मिला था, that was given later on. वो 1950 में मिला था when constitution was adopted, ठीक है, वो 1950 में मिला था. लेकिन ये song compose किया गया था 1882 to motivate the Indians to fight against the Britishers, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो फाइट करें. Then again, seeing this, one of the टाइम पे एक दूसरे जनरल सेक्रेटरी आया ब्रिटिशर्स के. The other British secretary on that time arrived in India and he saw that we are not able to control the Indians because they are in very anger कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं इंडियंस को क्योंकि वो बहुत गुस्से में हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है. सो दिस जनरल सेक्रेटरी नेम्ड लॉर्ड हार्डिंज, okay, so this he came to India and he again unified the Bengal. Why? There was also again उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन था, अगेन उसके पीछे कुछ ना कुछ उन्होंने फायदा देखा, ठीक है. सो 12 दिसंबर 1911 को फिर से बंगाल को यूनिफाइड करा गया कि जो इंडियंस हैं वो फिर शांत हो जाए. Yes, Persh. Then we have to make GK notebook. Is it very compulsory to ask in between GK notebook? अभी मैं बता दूंगी, अभी आप सिर्फ समझो पहले चीजों को. अगर समझ ही नहीं आएगा नोटबुक बनाने का भी क्या फायदा ना फिर तो, है ना, राइट? Yes, ma'am. सो 1911 में ही 12 दिसंबर 1911 को ही दोबारा से यूनिफाइड हुआ बंगाल. और यहीं से बिकॉज कैलकटा वाज द कैपिटल बिफोर, कैलकटा हमारी इंडिया की कैपिटल थी पहले और उसको दिल्ली में चेंज कर दिया गया.
फाइन। ऑन 12 दिसंबर 1911 को ही हमारी कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली में चेंज हो गई। फाइन। सो यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज. As you know that European countries, many of the European countries are very rich, so they want to have more land. उनको वो क्या चाहते थे कि और लैंड हमारे कंट्रोल में आ जाए. सो उन्होंने जो और कंट्रीज थी दैट वर लैकिंग समवेयर, दैट वर नॉट दैट डेवलप्ड, सो उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया इन विच ब्रिटिशर्स आल्सो टुक प्लेस. ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिया को बोला अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में छूट दे देंगे. फाइन, विल leave you in some things, in some laws, or in some paying some taxes or something, okay, and will not force you to follow the hardcore rules. ठीक है. और हम आपको फोर्स नहीं करेंगे. इवन उन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि हम आपको आपकी इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे या कुछ भी. They were so intelligent, Britishers were so intelligent कि वो हर चीज बहुत strategically करते थे. Fine, but Indians, they were very मतलब I'll not say or something, they didn't use their mind, they always used their heart, and what they said, okay, we'll help you. उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स की हेल्प करी उस लड़ाई को लड़ने के लिए. और ये वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड का वॉर था. इट वाज नॉट ओनली फॉर इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का वॉर था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने क्या कहते हैं लड़ाई लड़ी थी. फॉर यूरोपियन कंट्रीज वर देयर, ब्रिटिशर्स, दिस इंग्लैंड एंड ऑल, एवरीवन, मतलब इतनी सारी कंट्रीज ने जो थोड़ी अनडेवलप्ड कंट्रीज थी उनसे लड़ाई लड़ रही थी कि उनकी लैंड भी हम कैप्चर कर ले. सो व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन on 28 July 1914, first world war began in which India helped Britishers to fight. Okay, ठीक है. फिर ब्रिटिशर्स जीत गए फिर से. ठीक है. लेकिन इंडिया को फिर भी कुछ नहीं. फाइन, they had not given anything. उन्होंने फिर से पासा पलट दिया, फिर से चालाकी. they still did the same thing, they still did very cleverly, and उन्होंने दोबारा से अपनी चालाकी दी. they haven't helped India, they haven't leave them with some policies or some, again उसको उल्टा उनके ऊपर और hardcore rules बना दिए. One of the act was passed, that was Rowlatt Act. उसको Black Act भी बोला जाता था. फाइन, उस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था. रॉयलेट एक्ट पास कर दिया और उन्होंने इवन ये बोला कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा उसके ऊपर ओपन फायरिंग हो जाएगी. ठीक है. कि इंडियंस कुछ कर ही ना पाए, जो हमने प्रॉमिस करी थी उसके अगेंस्ट लड़ ही ना पाए वो लोग. ठीक है. ऑन द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मुस्लिम्स भी पार्ट थे इंडिया के, है ना. बंगाल के पार्ट थे, पार्ट में मुस्लिम्स भी रहते थे. तो वर्ल्ड वॉर में मुस्लिम्स के सुल्तान, जो उस टाइम उनको गॉड मानते हैं मुस्लिम, सुल्तान द खालिफ was beaten and was disrespected badly in this world war by the Britishers only. ठीक है. तो और कंट्रीज और ब्रिटिशर्स के की ने उनको डिसरेस्पेक्ट करा. ठीक है. द सुल्तान. सो उस वजह से मुस्लिम्स भी बहुत भड़के हुए थे. प्लस द इंडियंस देमसेल्फ was very angry कि हमसे जो प्रॉमिस करी गई वो तोड़ दी. ठीक है. तो क्या करा, इस चीज की चालाकी बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया. बिफोर द इंडियंस और द मुस्लिम्स डू सम, उन्होंने कहा हम रॉयलेट एक्ट पास कर देते हैं. दैट वाज अ ब्लैक एक्ट. इवन बहुत भयंकर एक्ट बना दे कि जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा उसके ऊपर ओपन फायरिंग कर देंगे. फाइन, कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो ब्रिटिशर्स का उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एक्ट पास कर दिया. सो what they did, they passed this act, and due to this act and due to this anger of first world war wala promise, people in Punjab, they crowdedly एक जगह इकट्ठे हो गए. that was Jallianwala Bagh. everyone knows the story behind Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh वाली story पता है. so yes, Anuvya and Arav is raising hand. So people crowdedly went there, okay, कि हम लड़ाई लड़ेंगे, okay, in which
जनरल डायर, उस टाइम पे जो हेड थे जनरल डायर, ही डिड ओपन फायरिंग, उन्होंने क्या करा, लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी, इन विच नंबर ऑफ most probably 400 300 something Indians were approximately died and 1039 people were injured. सोचो इतनी ओपन फायरिंग करी, लोग कुछ लोग तो खुद मर गए डर के मारे। वहां पे कहते वेल है, बहुत बड़ा वेल, आज भी अगर आप वहां जाओगे दैट वेल इज देयर, राइट? सो पीपल themselves went in that well and they died, अपने आप भी मर गए, कुछ लोग गोलियों से मर गए। सो दैट वाज वेरी, सबसे बड़ा मास्कर जिसे हम बोलते हैं, मास्कर मतलब ओपन फायरिंग में नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड, ठीक है, मास नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड, मास्कर मतलब वो था, फाइन। सो जलियांवाला बाग मैसेकर वाज डन ऑन 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ, जिसमें नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद यहीं से लोगों ने, the Indians, when Mahatma Gandhi also came to India on the same time and he see all the situation and started what, the non-cooperation movement। उन्होंने इंडियंस को गाइड करा, उन्होंने कहा लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी कि आप गोलियों से मारो या उनको ऐसे करो, लड़ाई लड़ी जाएगी जब आप उनको कॉपरेट नहीं करोगे, डिसओबे करोगे, फाइन। बिकॉज महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसा से लड़ाई नहीं लड़ी, ना कि वेपन्स यूज करके, ही वाज, तभी उनको बोला जाता है वो अहिंसा के पुजारी हैं, बोला जाता था ना उन्हें, फाइन। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई सिर्फ उनको कॉपरेट ना करके, उनको डिसोबे करके, ठीक है, ऐसे लड़ाई लड़ी जाएगी। सो स्टार्टेड अ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा, ठीक है, in which they said that will not cooperate, neither will pay taxes and follow any duties of Britishers। उसके बाद उसी टाइम पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, फाइन। ऑन सेम टाइम भगत सिंह एंड हिज टीम, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ठीक है, उन्होंने क्या करा, विद वायलेंस, उन्होंने वायलेंस के साथ लड़ाई लड़ी। One side Mahatma Gandhi is saying not to use the violence, other side these youngsters, this Bhagat Singh and all his team fought it with violence। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी पुलिस वालों पे, ऑन द पुलिस स्टेशन, फाइन। दे हैव फायर्ड द पुलिस स्टेशन, उन्होंने फायर लगा दी। दैट इंसिडेंट वाज नोन एज चौरी चौरा इंसिडेंट, इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड, ठीक है। So Mahatma Gandhi ये देखकर बहुत ज़्यादा, he was very sad that on one side I'm seeing people to not only cooperate with the Britishers and just fight fight with non-violence, हमें non-violence के साथ लड़ाई करनी है, लेकिन यहाँ पे भगत सिंह दूसरी साइड वायलेंस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंसा के साथ लड़ाई कर रहे हैं। He is using weapons, he is using guns and everything else। So but again the people requested Mahatma Gandhi, they requested Mahatma Gandhi, please guide us, please, this will not happen again, fine। So civil disobedience movement was started, to disobey the Britishers, ठीक है, civil disobedience movement start हुआ, फाइन, ऑन 12 मार्च 1930। इस मूवमेंट में क्या हुआ, गांधी जी ने अपने ही सी से सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम गुजरात ओनली, साबरमती आश्रम के पास से ही स्टार्टेड टेकिंग एक मुट्ठी सॉल्ट के हाथ में पकड़ के और लोगों को मोटिवेट करके कि आप भी पकड़ो, और उस मार्च, उसको बोला जाता था सॉल्ट मार्च, फाइन। यहीं से सॉल्ट मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, fine। They started and at the end after few years doing this all, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स अपनी चीजों से वो रहते मुकर रहे थे, every time they were promising। उन्होंने साइमन कमीशन भी, इवन एक साइमन कमीशन भी बनाई, जिसमें उन्होंने बोला that we'll do the conferencing, will ask the Indians to make their own ideas, खुद आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन क्या करा इंडियंस ने, अब उनकी बातों में नहीं आए, they said will not follow any commission, will not be part of any commission। So उन्होंने नारे भी लगाए, even they said
Simon, go back. Simon, go back. If you study the chapter, ठीक है, जब आपको डीपली पढ़ाएंगे, विल टेल यू. एक साइमन कमीशन बनाई गई थी, ठीक है. यस, Yes, ma'am. you want to ask something? You were raising hand. No, ma'am. I know this. Okay, you know this. So one Simon Commission was also made, but now Indians have known that they all are playing the tactics, they all are making just the strategies. So अब वो उनके against जा रहे थे. Fine. So they said he will not follow the Simon Commission or something. Now this is the time. Just now we want the पूर्ण स्वराज. अब हमें complete independence चाहिए. ठीक है. और पूर्ण स्वराज का जब एक ये फ्रेज बोला महात्मा गांधी ने, जब ये लाइन बोली, जब हमें क्या हासिल करनी है? पूर्ण स्वराज हासिल करनी है. सो ऑन 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अब हमें क्विट करना है, नॉट गेनिंग द इंडिपेंडेंस, बट बाय गेनिंग द इंडिपेंडेंस. अब हमें अपनी लड़ाई को खत्म करना है बाय गेनिंग द इंडिपेंडेंस. फाइन. So on 8th August 1942, India started the Quit India movement. In that they said that they need to have the पूर्ण स्वराज. ठीक है, पूर्ण स्वराज वाला आइडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही हो गया था, लेकिन अब ये पूर्ण स्वराज को हासिल करने के लिए लास्ट मूवमेंट करा गया. Fine. On the same time in April, Indian National Army was formed, and who was the head of this army? Azad Hind Fauj, Subhash Chandra Bose, in which he has said many things. Give me a blood, I will. बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली थी. कौन सा डायलॉग बोला था? What he said? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Give me a blood and I will give. Jai Hind, give me a blood and I shall give you freedom. उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ठीक है. So he used these words to motivate other people of his army, and this army was formed on April 1952, and by this only India gained independence. ठीक है. Britishers ने अपने weapons को छोड़ दिया, उन्होंने अपने हाथ नीचे कर दिया, and they said, yes, you can take the. As they got to know कि अब हम हार जाएंगे, so they on 15 August India 1947 India got its independence. Okay, स्वतंत्र भारत हो गया. And on 15 August every year we celebrate Independence Day ना. Fine. And after some years, after 2 or 3 years, India become republic. यहीं से इंडिया की गवर्नमेंट भी फॉर्म होना, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. 26 जनवरी 19 संविधान बनाया गया, जिसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रेम्बल लिखे गए, that we the people of the country will follow all the rules and regulations written in the constitution. ठीक है. India became republic, India became sovereign, secular, कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, having so much of religion regions, so there will be no भेदभाव or something differentiation. ठीक है. So 26 January 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस. in English we say it Republic Day. ठीक है. हिंदी में हम उसे बोलते हैं गणतंत्र दिवस. Okay, so I have added 2 more important dates. Born day of Mahatma Gandhi, that is 2 October 1869, and born day of Pandit Jawaharlal Nehru, that is 14 November 1889, that is celebrated as Children's Day, and Mahatma Gandhi's birthday celebrated as Gandhi Jayanti. Okay, and Pandit Jawaharlal Nehru was our first Prime Minister also of independent India. You know that, na? Okay, so these were the dates. Okay, I need more worksheet in the next class because time is also over and it will take some time. So we'll do in the next class. Okay, enjoyed the session? Sure? I want to see the smiling face. Okay, Kashni. Om. Okay, Apur, your hair have grown up, so make it cut. लड़की लग रहे हो आप. Okay, Avni, Nipun, Vatsil, Monish, Shabgun.
Still Shabgun voice is not coming. Aradhya is also there. One more new person. Aradhya. Hello Aradhya. Yes, ma'am. Hello. Do you know me? You're a new student? Yes, ma'am. From which school? From which Ma'am? school you have come from? Ma'am, Pushpini Okay. Dham. Place? Can you tell me the place? Ma'am, UP Dham. Okay, okay, okay. And Abhyan is also doing babysitter. Abhyan is taking care of his brother. है ना? अभियान दोनों चीजें कर रहा है, पढ़ाई भी और बेबी सिटिंग भी. ओके ओके चलो. Then we'll meet in another class. I hope everyone will have enjoyed, and everyone will revise these dates. And if Chandrasekhar, Ma'am, yes. enjoyed the session? Ma'am, yes. Okay, understood everything? Ma'am, yes. जब मैम पढ़ाएंगी या मैं पढ़ाऊंगी तो और डीप पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तो हमने ऊपर ऊपर से चीजें बताई है कि जस्ट टू कंप्लीट द जीके सेशन टुडे. Okay, Okay, just to have a brief knowledge. Okay everyone, bye. Bye. Shabgun, आपकी आवाज नहीं आ रही. Next time I want to meet you. Okay.